और फिर भी कुल मिला के उनके सारे जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर देने के बाद भी आखिरी में वो लोग किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसकी निश्चित रूप से मेरे मन में भी काफ़ी कष्ट है, क्योंकि किसानों का विषय है और किसान ठंड में इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर बैठे हुए हैं और कोविड का संकट भी है, तो निश्चित रूप से हम सब लोगों के मन में भी रात दिन चिंता रहती है। और इसलिए हम लोगों की लगातार पहले भी कोशिश रही है और अभी भी मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों और बहनों को आग्रह करना चाहता हूं कि आप सब ने चर्चा के दौरान जो प्रश्न उठाए थे उन प्रश्नों का समाधान करने के लिए लिखित प्रस्ताव भारत सरकार ने आपके समक्ष भेजा है। आप उन प्रस्ताव पर विचार करें और आपकी तरफ से जब भी चर्चा की स्थिति के लिए कहा जाएगा, भारत सरकार एकदम चर्चा के लिए तैयार रहेगी। और मैं आपके माध्यम से किसानों को यह भी कहना चाहता हूं कि पूरा देश इस बात का साक्षी है। 2006 में स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में भी लंबे समय तक इंतजार हुआ कि एमएसपी को 1.5 गुना करके लागू किया जाए, लेकिन वो लागू नहीं किया गया। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बन गए तब भी ये बात खड़ी हुई थी, तो स्वाभाविक रूप से जब एमएसपी को 1.5 गुना किया जाना है तो वित्तीय भार तो बढ़ेगा ही। लेकिन ये मोदी जी की प्रतिबद्धता किसानों के प्रति थी कि उन्होंने जो लागत मूल्य है उस पर 50% मुनाफा देकर और एमएसपी घोषित करने का निर्णय किया और उसका लाभ आज देश भर के किसानों को मिल रहा है। और आप देखेंगे कि कुल मिला के कृषि मंत्रालय के बजट की स्थिति को भी देखेंगे तो आज 1,34,000 करोड़ है। यह जब यूपीए की सरकार थी उससे लगभग 6 गुना बढ़ोतरी है। लगातार सभी स्कीमों के माध्यम से इस बात की कोशिश की जा रही है। कई बार सरकारों के लिए बड़ा लोकप्रिय होता है, जैसे यूपीए सरकार में एक निर्णय हुआ 10 साल में 53,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। कर्जा किसका माफ हुआ किसका नहीं हुआ यह विवाद का विषय किसानों में हमेशा ही बना रहा, लेकिन 10 साल में 53,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करना इसको बड़ी उपलब्धि यूपीए गवर्नमेंट में माना गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपया हर साल भारत सरकार के खजाने से निकालकर किसानों के खाते में डालने के लिए योजना बनाई। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज 10.5 करोड़ किसान को लगभग 1 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार की ओर से उनके अकाउंट में भेजने का काम किया गया। किसान को बुजुर्गावस्था में भी सुरक्षा सामाजिक मिल सके, इसलिए पीएम किसान मानधन योजना बनाई गई, पेंशन का प्रावधान किया गया। 21 लाख के करीब किसान आज उन योजनाओं से जुड़े हैं। जो 60 वर्ष की उम्र पूरी करेंगे उनको 3,000 रुपया मासिक पेंशन के रूप में मिलेगा, जो उस समय निश्चित रूप से काफ़ी मददगार होगा। छोटे किसान देश में 86% हैं और छोटे किसान के पास निवेश करने कोई जाता नहीं। उसके पास खुद के पास इतना पैसा है नहीं कि वो निवेश कर सके। वो पढ़ा लिखा भी है, जागरूक भी है और वो अच्छी खेती करना भी चाहता है और वो चाहता है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करे, महंगी फसलों की ओर जाए, लेकिन उसको मार्केट उपलब्ध नहीं होता और मार्केट उपलब्ध नहीं होता इसके कारण वो कोई रिस्क नहीं ले पाता। इसलिए नए कानून बनाए गए हैं कि इन कानूनों के माध्यम से वह महंगी फसलों की ओर आकर्षित होगा, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकेगा, निजी निवेश उसके पास पहुंच सकेगा, अच्छे एग्रीमेंट करके अपने उत्पादन के वाजिब दाम प्राप्त कर सकेगा, वैश्विक मानकों के आधार पर खेती कर सकेगा,
जिससे कि उसके उत्पादन का एक्सपोर्ट भी हो सके, ये रास्ते इन कानूनों के माध्यम से खुलते हैं। सरकार ने नए 10,000 एफपीओ बनाने का कार्यक्रम भी प्रारंभ किया है और इन 10,000 एफपीओ पर 5 साल तक केंद्र सरकार अपने बजट से ही 6,850 करोड़ रुपया खर्च करने वाली है। ये एफपीओ से एक नई क्रांति खेती के क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में शुरू होने वाली है। यह भी मोदी जी की किसान, कृषि और कृषक के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसको जाहिर करती है। अभी कोविड के दौरान भी आप सबने देखा कि दुनिया में सब चीजें बंद हो गईं, लेकिन भारत में मोदी जी की दूरदर्शिता के कारण खेती और किसानी के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो निर्णय किए गए उसी का परिणाम था कि किसान ने अपनी फसल की कटाई पूरी की, किसान ने अपनी फसल को सरकारी समर्थन मूल्य पर पूरी तरह से बेचा, पहले से अधिक पैदावार हुई, पहले से अधिक खरीद हुई, ग्रीष्म ऋतु की बुआई गत वर्ष की तुलना में अधिक हुई, खरीफ की बुआई गत वर्ष की तुलना में अधिक हुई और किसान को उस बीच में भी पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे डीबीटी के माध्यम से पहुंचते रहे और आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत कृषि और संबंधित क्षेत्र में सुधार आए और निजी निवेश गांव तक पहुंचे और वो निजी निवेश के अंतर्गत जो संरचनाएं निर्माण हों वो मूल रूप से किसान के काम आए। अभी संरचनाएं जो बनी हुई हैं वो व्यापारी के काम तो आती हैं, लेकिन किसान के काम नहीं आती, क्योंकि वो बड़े स्थान पर बनी हुई हैं। अगर संरचना खेत के पास होगी, गांव के पास होगी, तो किसान उन संरचनाओं का उपयोग कर सकेगा, चाहे वो वेयर हाउस हो, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज हो, चाहे वो अन्य प्रकार की संरचनाएं हों। तो 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड उसे घोषित किया। फिशरीज के लिए 20,000 करोड़ रुपए का फंड, एनिमल हस्बेंड्री के लिए 15,000 करोड़ रुपए का फंड, छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिटी के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड, 4,000 करोड़ रुपया हर्बल पार्क के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपया। तो लगातार मोदी जी के नेतृत्व में इस बात की कोशिश की जा रही है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो गांव को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा और कृषि को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। कृषि और कृषक की निर्भरता किसी पर होगी तो गांव की निर्भरता भी किसी और पर होगी, और जब तक कृषि और गांव दोनों आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तब तक देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो सपना है वो पूरा नहीं होगा। इसलिए लगातार आपने देखा होगा, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क योजना के 3rd फेज का मामला हो, चाहे मनरेगा में राशि बढ़ाने का मामला हो, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप के अभियान का मामला हो, चाहे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सरकार के निवेश का मामला हो, मोदी जी के नेतृत्व में लगातार इस बात की कोशिश की गई है कि गांव और कृषि यह आत्मनिर्भर बने, समृद्ध बने और देश के नवनिर्माण में इसका योगदान अधिकतम हो सके। इसलिए ये सब चीजें सिलसिलेवार एक दूसरे से कनेक्ट हैं और इसलिए कानूनों के माध्यम से भी हमने द्वार खोलने की कोशिश की है, लेकिन इस पर कुछ किसानों की जो भ्रांति थी उस भ्रांति को भी दूर करने के लिए हमने प्रस्ताव यूनियंस को भेजा है। मैं आपके माध्यम से पुनः यूनियंस को आग्रह करना चाहता हूं कि वो जल्दी से वार्ता के लिए तिथि तय करें और अगर इस पर उनकी कोई आपत्ति है तो सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। मुझे तो प्रमुख रूप से इतना ही कहना था। पीयूष भाई को अनुरोध करूंगा कि कुछ विषय रख सकते हैं। I'll just briefly touch upon the issues that emerged out of the several meetings that we held with the farmer unions. We had very detailed discussions on all the laws with the union leaders. We made very minute notes of all the observations and comments that were made by the union leaders. And since they were not forthcoming with any specific issues, but were talking on more general terms and only sticking to one demand of repealing of the 3 laws, we were able to cull out the main issues that emerged from the discussions. And as Honorable Minister Shri Narendra Singh Tomar ji explained,
it is very clear on any reading of the law that this law does not affect APMCs at all. It has no concern with the existing system of state APMCs. APMCs are protected as they were in the past, and they will not be affected in any way by the implementation of the new laws. The mandi system remains as it is. There were some concerns that there were no taxes stipulated in the law, for which we were willing to make amendments to consider their request that the taxes imposed on state APMCs under the APMC Act will also apply to private mandis or private marketplaces. The government was willing to provide that to ensure a level playing field and further strengthen the marketplaces, the APMCs of the government. Thereby, there was nothing left to argue about the APMCs for the farmers. Similarly, an absolute wrong impression was sought to be created that government will not continue the procurement under MSP. The government has very categorically, on the floor of the House, on national television, made it clear that state procurement by the government will continue at MSP prices as at present through the APMCs, and all the necessary taxes and other charges paid to the state APMCs will continue. This should completely dispel any falsehood being sought to be propagated that MSP system will get affected. Similarly, on the law itself, some arguments were sought to be made that the law could not have been enacted by the center. Very categorically, none of the laws is in the state list. They are part of the concurrent list, and trade is what is being sought to be encouraged by these laws. Therefore, there should be absolutely no doubt in anybody's mind that the center has the power to enact laws under the concurrent list for trade, particularly in foodstuffs, which has been very elaborately defined in the concurrent list, and there are several Supreme Court orders which have further elaborated on this subject, and therefore the center is very competent to enact these laws. There were some concerns that farmers will be forced to sell their produce in the private market. This is completely erroneous. I would like to confirm through you to the nation and the farmers of the nation that there is absolutely no provision in the law which brings an element of compulsion on any farmer whatsoever. The farmer is only being given another option, another choice, which will help him to expand his area of business or trade. He's being allowed to sell wherever he wants, whenever he wants, at whatever price and terms and conditions that he feels is good for him. If he still chooses to go to the APMC market, there is absolutely no stopping him under the laws. So while there is no restriction on the farmer, it is only an option. It is opening new doors for the farmer to expand his income, to become more prosperous, to go in for more profitable crops, to look at alternate agricultural produce which fetches them better market. And while preparing the law, every care has been taken that the farmers has an upper hand in the agreements that are made with any contract, under any contract or with any trader. In every law, we have stipulated that the farmer's land will be secure. No court, no SDM, no authority can pass any order whatsoever which will impact the farmer's land. The farmer's land will remain the farmer's land, and there will be no law, there will be no
attaching the farmer's land under any circumstances. However, since the farmers raised an apprehension, we were willing to consider if it further needs to be strengthened or clarified. The government is happy to consider that. Similarly, all the agreements that are made under this law are in the favor of farmers. So in case the prices in the marketplace, even after the farmer has entered into an agreement, rise and he can get a better price going outside the contract, he is free to go out of the contract and sell to anybody he likes at a higher price. All that he will be required to do is pay back any advance that he may have taken under the contract without any penalty and in a reasonable time. No restriction is also put on him in terms of time. The SDM can choose to give him any amount of time to repay only the advance without any penalty. So if prices go up, farmer has the choice to sell outside the contract, or if the contractor is willing to pay the higher price, the choice is of the farmers. Similarly, if the price were to fall below the contract price, the trader does not have the option to wriggle out of the contract. Trader is still bound by the contract and he will be bound to pay the farmer the contracted price, even if the market price goes down. So friends, in every situation, whether price goes up, it is to the advantage of the farmer. If the price goes down, it is still to the advantage of the farmer, because the trader will have to pay him the contracted price and cannot take the benefit of lower prices. If the trader does not buy the produce at the contracted price, in our wisdom and our feeling that the farmer should get quick justice, we provided for a local dispute resolution mechanism which can be decided in the contract. If it's not decided, the local SDM has to decide a dispute within 30 days compulsorily. Some farmer leaders tried to say the SDM may not give an order in favor of the farmers, or maybe he may be under pressure of the trader. Government was willing to provide the option that the farmer can choose any available laws for dispute resolution. So our proposal to have the SDM within 30 days decide will not in any way affect the farmer's right to go to a court of law or any other dispute resolution mechanism that is available to the farmer today. So we were ready to ensure that the private mandis are also taxed at the same level as APMC, so that the level playing field which they were concerned about can be ensured. We were willing to give a written assurance that MSP will continue in its present form. We were wanting to ensure that the land of the farmers remains protected and add any more provisions that may be required to further strengthen the security of farmers' land. The laws are optional to the farmer. He is not being bound to go to sell in any particular private mandi. He can choose to continue to sell as at present in the APMC. MSP will continue to be procured through the state-approved APMCs, and we were willing to provide all options to the farmer for going for dispute resolution. Similarly, as Honorable Minister Tomarji said, on the Electricity Amendment Act, the government was very flexible that the current system would continue and state DISCOMs would be given the subsidy by the state directly to the DISCOM. The current system of providing subsidized power to the farmer would continue as at present. Similarly, on the ordinance for pollution, which we have recently enacted, largely it has been on the guidance of the Honorable Court. However, we were willing to discuss with the farmers and come up with a solution which would adequately protect the farmers and ensure that they were not in any way taken to criminal proceedings or to the high levels of
penalties up to which the current ordinance goes. That ordinance, high penalties are largely meant for industry or industrial pollution, and the government is committed for the well-being of the farmers. So the parali issue, the stubble burning issue, government was very, very sympathetic to ensure that the farmers are not put to any inconvenience in that. So in a way, after all these discussions, these were the issues that effectively came out, to which the government was very, very open, very flexible, very, very desirous of finding an amicable solution in the interest of our Annadatas, our farmers. As Honorable Tomarji said, Prime Minister Modi's government has for 6 years continuously worked for the welfare of the farmers through a variety of measures which he highlighted, be it the increase in budget for agriculture up to 1,34,000 crores, which is nearly 6 times what it was under the UPA, to ensuring adequate supply of fertilizer throughout 6 years without any black marketing through the neem coating, by giving every farmer 6,000 rupees every year through the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, unheard of direct benefit transfer straight to 10 crore plus farmers every year of 6,000 crore rupees has very successfully taken off. More than 1 lakh crores have been disbursed so far to the farmers of India in a variety of ways, through Pradhan Mantri Pension, Fasal Bima Yojana, Farmers Pension.